Welcome back to the physics class. We were discussing the thermal properties of matter, in which thermal expansion already we have discussed. Today we are going to study an important topic, and the topic is specific heat. And the topic is specific heat. What is specific heat? The specific heat of material of substance may be defined as amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. It means if you want to raise the temperature of 1 kilogram substance, 1 kilogram है 1 gram है, उसी के अकॉर्डिंग निकल जाते हैं यूनिट्स. If you have a 1 kilogram substance and what you have to, and the temperature of that substance is 10 degree, what you have to do, you have to raise the temperature of that substance up to 11 degree. It means we have to raise the temperature by 1 degree of 1 kilogram of substance. How much amount of heat I have to supply to that substance, that is called its specific heat. It means 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको जितनी भी हीट सब्सटेंस को देनी पड़ेगी, that is called its specific heat. That is called its specific heat, and its symbol is C. Its symbol is C. In SI system, if you are taking the SI system, we take SI system की अगर आप बात करो, mass we have to take the 1 kilogram, and temperature you can whatever the take, delta T मतलब change in temperature, that be 1 degree, 1 degree Celsius, अगर डिग्री लिखते तो Celsius, और you can write it as 1 Kelvin. मतलब if अगर ऐसा यूनिट आप यूज करते हो, मास विल बी इन 1 किलोग्राम, सब्सटेंस आप 1 किलोग्राम लोगे, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाओगे. बट इफ वी आर टेकिंग दिस सीजीएस यूनिट, ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी फिर, चलो उसकी बात करते हैं हम अभी. सीजीएस में देखिए, देन व्हाट विल बी इन सीजीएस सिस्टम, मास विल बी 1 ग्राम एंड डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर विल बी दैट 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. Okay, if you are taking the substance as 1 gram, that CGS unit will be there, and taking 1 kilogram, it means the SI units are there. So specific heats units will be, that is joule per kilogram per Kelvin. Joule per kilogram per Kelvin. 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी जूल्स में हीट आपको देनी पड़े, तो एक स्पेसिफिक हीट भी जूल्स में आएगी. नाउ इन सीजीएस heat will be in calorie per gram per Kelvin. Joule per kilogram per Kelvin or calorie per gram per Kelvin in CGS system. Okay, so we are calculating the formula. Delta Q is heat supplied. Delta Q is heat supplied is equal to mass of substance. जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी. Another delta Q is equal to delta T. मीन जितनी ज़्यादा हीट उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा. So now what we have to do, delta Q is equal to m delta T. Removing the proportional and equating it, delta Q is equal to C m delta T. So what is C? C is specific heat. What is the formula of specific heat? That is delta Q by m delta T. Delta Q by m delta T. Delta Q is heat supplied, m is mass, delta T is increase in temperature. So delta Q is in joules, mass is in kilogram, or temperature is in Kelvin. So SI system, joule per kilogram per Kelvin is the unit. So what is the formula for specific heat? That is delta Q by m delta T. Delta Q is equal to, the C is equal to delta Q by m delta T. Okay, so where C is specific heat. This is the formula for calculating specific heat. Specific heat is of two types: specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume.
what we are studying now, specific heat at constant volume. Specific heat at constant volume. It means if we are taking the volume of the substance, matter, gas, constant, if volume of the substance remains constant, that what amount of heat you have to supply to the substance to raise its temperature by 1 degree Celsius of mass 1 kilogram, that specific heat is called CV. Okay, means specific heat at constant volume means heat required to raise the temperature of 1 kilogram substance by 1 Kelvin at constant volume. At constant volume अगर आप लास्ट में लिख देते हो, इट मीन्स गैस का वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहना चाहिए. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सप्लाई द हीट दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक heat and represented as CV. That heat is represented as CV. So CV is called specific heat at constant volume. Again, what will be CP? That is specific heat at constant pressure. And you can write it as heat required to raise the temperature of 1 kilogram substance by 1 Kelvin at constant pressure. At constant pressure. Constant pressure पे जो हीट आपको देनी पड़े 1 किलोग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इट CP, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. What is it called? That is specific heat at constant pressure represented by CP. They are related it as CP minus CV is equal to R. R is gas constant. Relation between specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume is CP minus CV equals R. R is gas constant. Next, we are going to study what is heat capacity. This word specific heat or can be called as specific heat capacity. Now what we are discussing only the topic is heat capacity. Okay, heat capacity it means यहाँ क्या था, 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़े दैट इज स्पेसिफिक हीट. एंड व्हाट इज हीट कैपेसिटी? The heat required to raise the temperature, heat required to raise the temperature of whole mass of the substance, मतलब टोटल जितना भी मास है, whole mass of substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius is heat capacity. मतलब आपके पास मान लो 10 किलोग्राम है पानी है, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हो, तो पूरे 10 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी दैट इज हीट कैपेसिटी. और उसमें से अगर 1 किलोग्राम पानी आप लोग उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी दैट इज स्पेसिफिक हीट. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन specific heat and heat capacity. Heat capacity is for the total mass of the substance to raise the temperature by 1 degree Celsius, and specific heat is to raise the temperature of 1 kilogram of substance by 1 degree Celsius. That is called its thermal capacity, or you can say heat capacity. Okay, so what is heat capacity? Heat capacity can be written as specific heat is C for 1 kilogram into total mass of the substance. Total mass is M. So heat capacity is specific heat into molar mass. Specific heat into molar mass of a substance, that is called heat capacity. Okay. And next is latent heat. Next topic is latent heat represented by L. Now if you have a solid and giving heat, it will be converted into liquid. Okay, it means there is state change. There is a change of state from one form to another. Heat required to change the unit mass of substance completely from one state to another. What is latent heat? Heat required to
change the state of unit mass of substance from one to another completely. 1 किलोग्राम आपके पास सॉलिड है, मान लीजिए 1 किलोग्राम सॉलिड को आपने लिक्विड में चेंज करना है. इट मीन्स हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. दैट इज कॉल्ड लेट कंप्लीटली, जितना सॉलिड है उतना सारा का सारा कन्वर्ट हो जाए, जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, रिप्रेजेंटेड बाय L. दिस इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. Latent heat of fusion. What is latent heat of fusion? Latent heat of fusion is heat required to convert 1 kilogram solid into liquid. 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कंप्लीटली चेंज करने के लिए जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. व्हाट इज इट कॉल्ड? दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके. सेकेंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम liquid into vapors. completely is must, complete आपको उसमें कन्वर्ट करना है. 1 किलोग्राम आपके पास लिक्विड है, and what you have to do, converting 1 kilogram of liquid into completely vapors, heat required is called latent heat of vaporization. That is called latent heat of vaporization. Okay, 1 kilogram substance के लिए. Now next, the topic we are going to discuss, that is principle of calorimetry. Principle of calorimetry. Topic is principle of calorimetry. Principle of calorimetry. एक कैलोरीमीटर क्या होता है? सबसे पहले, इज अ सिलेंड्रिकल वेसल मेड अप ऑफ कॉपर एंड प्रोवाइडेड विद अ स्टीरर एंड अ लिड. मैं तो सिलेंड्रिकल शेप में होता, सिलेंड्रिकल में ही बना देते हैं. ये बेस हो गया इसका, लिड इज देयर एंड इट इज अ स्टीरर. ये इसमें एक स्टीरर होता है. ओके, कॉपर का बना. इट इज यूज टू मेजर हीट क्वांटिटीज बाय मेकिंग यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स when bodies at different temperature are mixed together in calorimeter. Suppose you have two liquids A and B. Its temperature is T1, its temperature is T2. It is 10 degrees Celsius and it is 5 degrees Celsius. The two liquids are mixed in this calorimeter. Both the liquids are mixed in this calorimeter. They are at different temperature. They exchange their heat. Heat always flows from higher temperature to lower temperature. तो heat one से दूसरे में flow करेगी. The bodies at high temperature loses it, and while those at lower it will lose it. B will gain heat. So keep their temperature uniform to minimize the loss of heat due to radiation. Calorimeter is just usually placed in a jacket. हम क्या चाहते हैं, हीट बाहर ना जाए, तो इसको एक जैकेट में कन्वर्ट करके रखा जाता है, एक कंटेनर में, ताकि हीट बाहर ना जाए. जितनी हीट ए लॉस्ट करे उतनी बी को हीट मिले. द स्पेस बिटवीन वॉल्स ऑफ कंटेनर, हीट बाहर ना जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉटन से या वूल से फिल कर दिया जाता है. वूल से इसको फिल करते हैं, सो दैट हीट कैन नॉट बी एग्जिट फ्रॉम दिस. द लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन इज फर्दर मिनिमाइज्ड बाय पॉलिशिंग द आउटर सरफेस ऑफ द मीटर. आउटर को अगर आप पॉलिश कर दोगे तो भी हीट बाहर नहीं जाता. मतलब रेडिएशंस के फॉर्म में हीट का लॉस मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए. इफ यू अज्यूम दैट नो हीट इज लॉस्ट टू सराउंडिंग बाय द प्रोसेस, अगर हम ये मान लें भी कोई भी हीट सराउंडिंग में लॉस्ट ही नहीं हुई, जितनी हीट ए ने लॉस किया उतनी सारी हीट बी को मिली है, सराउंडिंग में कोई भी लॉस नहीं हुई, देन हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी. तो क्या होता है, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन. हीट लॉस्ट इज इक्वल टू
heat gain. This is called principle of mixtures or principle of calorimetry. It means if you are mixing two liquids at different temperatures, the liquid at high temperature will loses heat and the liquid at lower temperature will gain heat. If we cover the apparatus in such a way that no heat is lost to the surrounding, so it means heat lost by A is gained by the another liquid. Thus this is called principle of calorimetry. This law is a consequences of conservation of energy. एनर्जी कंजर्व्ड ही रहती है. Okay, so this was principle of calorimetry. So this was the concept of calorimetry. It is an important concept today, and this is enough for this because there is a practical video along with this. So till then, thanks and have a nice day.